Hello, everyone. Welcome to yet another episode on the Third Man Cricket Show, and we are here to review the first ODI between South Africa and India. So, as you can see at the bottom of your screen, we have just given the summary to. So, those who haven't tuned in to what happened in today's ODI, South Africa managed to win this, and as usual, India losing the first ODI of a bilateral series. And thanks to a brilliant 100 from Bavuma and Rassie Anderson, it was too good for India to chase it down. And something positive for India is the return of Shikhar Dhawan and Virat Kohli amongst the runs in the top order. But apart from that, nobody in the top order managed to stick around. A little bit of handy cameo from Shardul Thakur right at the end, but it proved out to be too much of a task for India to chase it down. So joining me with us on the panel is Ankit and Omkar here. So Omkar once again sporting his new beard. We thought that new beard would bring some luck for India in 2022, but sadly कुछ luck मिला नहीं. And ट्रिम करना Ankit as पड़ेगा. always trim करना पड़ेगा exactly. And Ankit, as always, really happy to see you on the show, especially late night shows पे. Really happy to hear from you, and also everyone who joined in the comments. Already we can see lots of people tuning in before 10:30 p.m. onwards. So Sands, welcome back to India. I mean, obviously nothing beats the feeling of being in your home. And Rahul Dravid as coach and as a captain, unfortunately, breaks my heart to say it has been a disaster in the larger picture. So let us start off with you, Omkar, on this note. So when Rahul Dravid came in, we all thought that finally a new era is about to enroll in Indian cricket. But now, three months later, how do you rate Team India under Rahul Dravid? We have played one T20 series, one Test series, and now the first ODI has been done. So how do you rate the impact of Rahul Dravid so far? Do you feel it's too early to judge him, or do you think कि मतलब थोड़ा तो है मतलब डर, according to you? No, it's just the early days because it's just been 3 months, and we can't judge anyone's coaching instinct or particular period. But in the span of 3 to 6 months, because अगर 6 महीना हो गया तो it's fine. It's just the early days because the transition he has brought in the NCA and along with the under 19, it's just incredible. We can see the likes of Ruturaj Gaikwad, Devdutt Padikkal, and many more domestic players making their mark in the international level and along with the IPL. So it's too early to judge Rahul Dravid as a coach. Exactly. So it's too early to judge indeed. Sanmay in the comments, पहली match देवासाठी. So as always, this is the mantra for all the Indian fans. Also Mumbai Indians fans, आपके लिए भी मतलब this is like नहीं, nothing ये new तो for you हमारा guys. हर साल का है. 2013 से हर Exactly. साल का है. तो पहला मैच ओमकार हार एकदम जाए chill लेकिन है. फाइनल जीत जाते. पहला मैच So हारे लेकिन indeed, फाइनल जीत ओमकार जाते. इसलिए Mumbai Indian fans, you know the script, you know what is going to happen. So that's not a worry. So comments ले लेते before we take Ankit on the show. So Aditi Sinde has joined us for the first time and she's saying hey, and also said that Rahul is a good player but pathetic captain. So we'll take this question to you, Ankit. I mean, obviously, जब Test series चालू थी in the second Test match, KL Rahul captained the side, and even in those streams we were a little bit critical about KL Rahul's captaincy, especially जो last innings में जो उन्होंने captaincy की थी. Once again today, a very average kind of a performance as a captain. Venkatesh Iyer के ऊपर बहुत बात हो गई है stream में. We'll talk about why isn't he being used, but I just want to know your thoughts on KL Rahul's captaincy in this series so far. Well, I mean, no words, and I'm just worried with the fact कि और 2 matches बाकी है, so how he's gonna perform as a captain, because शायद जितनी उनकी बैटिंग अच्छी है, उनकी कप्तानी उनको बहुत दूर, और वो एक बड़ा जमीन आसमान का फर्क लगता है जब उनकी कप्तानी और उनकी बैटिंग की बात करें. बट आई थिंक इट वाज वेरी बिलो एवरेज, आई वुड रादर से, बिकॉज शायद जो टेम्बा बवुमा ने किया, आई थिंक ही कैप्टन टीम इन द वे इट हैज टू बी कैप्टन एंड ही गॉट द रिजल्ट. आई मीन, शायद हम तीनों स्ट्रीम पे, हम तीनों या किसी इंडियन फैन ने ये नहीं सोचा था इडन मार्करम 5 ओवर का स्पेल डालेंगे, एंड इवेंचुअली गॉट अ विकेट ऑफ केएल राहुल, एंड दैट वाज अ बिग फिश, बिकॉज शायद क्योंकि अगर केएल राहुल थोड़ा और लंबे देर तक खेलते, शायद ये मैच थोड़ा एक बैलेंस हो जाता है या फिर एक अच्छी शुरुआत मान जाती भारतीय टीम की तरफ से. बट he got the big fish, and शायद ये एक ऑफ्टन थ्रू द मैच, आई थिंक जो टेम्बा बवुमन ने किया, अगर उसी पैटर्न में केएल राहुल काफी चीजें करते, जैसे कि टेम्बा बवुमा ने 6 बॉलर का उपयोग किया जो केएल राहुल ने नहीं किया. बवुमा ने स्पिनर को लाया था पावर प्ले में, शायद हम वो कर सकते, शायद जल्दी क्विंटन डिकॉक को वो एक जल्दी विकेट मिल जाती है. हमें 27 रन पे आउट हुए थे, तो अगर वही विकेट 10-15 रन पे आउट होते तो शायद
उनका जो मिडल ऑर्डर है पावर प्ले में एक्सपोज होता है. सो these are small things which eventually make a big difference, क्योंकि उनकी जो मिडल ऑर्डर में पार्टनरशिप 200 रन की बनती है, which actually is a worry because 50 ओवर के फॉर्मेट में नंबर 4 विकेट पे एक साझेदारी बनती है, वो 50 रन पे जाती है. आई थिंक इट्स डिसअपॉइंटिंग, होपिंग समथिंग बेटर एंड बेटर आइडियाज फ्रॉम हिम इन द अपकमिंग मैचेस. एग्जैक्टली मतलब वी शुड होप फॉर दैट बिकॉज 2 मैचेस उन्होंने अभी तक कैप्टनसी की है ये टूर पे एंड both the matches not gone according to him, but it's very difficult to judge him just based on 2 matches. But जितना हमने देखा, I think it's really looking not so promising. शिवानी in the comments ने अच्छा यहाँ पे कहा है कि he doesn't have any instinct or he doesn't back his instinct. I think it is the second part. मतलब he is not able to freely express himself in terms of his decision making on the field. So we'll be talking about this main talking point because first innings में we all had this question in mind. मतलब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओमकार ये केएल राहुल said that Venkatesh Iyer is our 6th bowling option, but Yes. today's match he didn't even bowl 1 over. So I want to know your thoughts. Why isn't Venkatesh Iyer bowling? Like think from a team management's point of view, and you can answer that. वेल इट्स मतलब काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि द थिंग इज कि अगर आपको हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट चाहिए था जो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, आपने वेंकटेश अय्यर को सिलेक्ट किया, who has been bowling for KKR and for in the domestic circuit as well, और इंडियन टीम के लिए थर्ड T20 में बॉलिंग किया था इन ईडन गार्डन्स. तो मुझे ऐसा लगा था कि ही माइट जस्ट गेट नॉट at least 5 to 6 overs, not a long spells, but few overs like maybe 4 overs, and they might have taken probably the 6 or 7 overs from the other bowlers who is going a bit expensive, because Shardul Thakur leaked almost 70 to 72 runs, and Bhuvneshwar Kumar was also leaking runs. He gave around 65 with being wicketless. तो ऐसे टाइम पे वेंकटेश अय्यर अगर एक पार्ट टाइमर बन जाते एंड ही कुड हैव बोल 3 to 4 overs और मे बी 5 overs, अच्छा रहता, क्योंकि हमने देखा कि मार्करम वाज बोलिंग द फर्स्ट ओवर ऑफ द सेकंड इनिंग्स. वी डोंट सी दैट. Usually I thought that there would be Janssen, maybe Lungi Ngidi, or maybe Henrik Feluquayo, but it was Markram the spinner, and at the toss Bavuma said that the pitch might be dry, so we might add spinners. So we are playing with 2 spinners, that is Maharaj and Tabrez Shamsi, but he added the third spinner as well in place of Eden Markram. So that was a great appreciation for Temba Bavuma, the captain, because what happens, people troll him for sometimes for his height, or he hasn't played much matches and he's the captain of South Africa. People just say that this has been a political thing, that in South Africa we know what is happening, the balance of black and white, and but still he did a fair job tonight. Exactly, and captaincy के बारे में Temba Bavuma, I think Aditi has also expressed what her opinions are. Temba Bavuma can handle captaincy pressure and manage to play his game along with it also, but that's not the case with Indian captain KL Rahul, as he can't handle captaincy pressure and it is affecting his personal game. This last point, ये जो है, I think this is where we might need to be a little bit worried. Like KL Rahul is a brilliant batter. We know how he actually bats. या ओंकार आप कुछ कह रहे थे? The thing is, people थोड़ा ज़्यादा ही जज कर रहे हैं केएल राहुल को at the international circuit, I feel, क्योंकि सी पीपल आर जजिंग हिम. मतलब हम लोग ने बात भी किया रहेगा, और बाकी के इसमें जहाँ पे भी केएल राहुल की कैप्टनसी की बात होती है, पीपल और लाइक यार आप आईपीएल में देखा है कैसे कैप्टनसी कर रहे हैं यार, आईपीएल में टीम भी जोकर वाली मिली है, वो क्या करेगा? You know, Okay. if a team, Garvit, if you are watching, yeah. if your team is not, if the captain is around getting 80 runs on the board, or around 40 or 50 balls in the T20 match, and the team is not chasing 4 runs in the last over, so you know it's definitely something wrong with this team apart from the captain. But it's too early days for to judge Rahul as a captain. काफी अच्छे प्लेयर है, कंसिस्टेंटली ओपन करके हम लोग को स्टार्ट्स दिए हैं हर एक फॉर्मेट में, since the England series, I guess he got permanent in the test side as well, so it's too early to judge. Too early to judge indeed. But speaking about judging a player, so South African cricket's new rising star, I won't say young player because age is not in his side, but Rassie Van Der Sen, I mean, Ankit, coming to you, averaging 70 odd in ODIs after 30 playing 30 matches or so. It's a fiery statement, as Sands is saying in the comments. Reminds me of Michael Hussey, who also debuted late and left like a champion. So I want to know your thoughts on the kind of an innings both of them played, like Bavuma also and Rassie also. So
जब हम ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे देख रहे थे, मैनी वर क्रिटिसाइजिंग बवूमा बिकॉज ऑफ हिज लोअर स्ट्राइक रेट, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक वो जो पार्टनरशिप थी इट वर्क रियली वेल बिकॉज Rassie was going at a great strike rate while Bavuma was playing the second fiddle to that partnership. So on this slow wicket, you saw 297 proved out to be a big score. So I think the Wo partnership, they played, both of them played really well according to me. So I want to know your thoughts on Rassie and as well as both the players 100 and that partnership which proved out to be match winning. Well, I think it's more about they didn't panic when they lost 3 wickets, and that's something where you want to learn as a team. And शायद यही कहानी हमने टेस्ट सीरीज में भी देखी थी कि हालांकि काफी जल्दी विकेट्स खोती थी लेकिन कभी पैनिक नहीं किया. दे एवरी टाइम दे मैनेज टू स्कोर ऑन एन एवरेज बेसिस 220 to 250 runs in and low scoring match it's a too much. So आज भी हमने वही देखा है एंड एक्चुअली खास करके आज महसूस भी नहीं हुआ, काफी आराम से उस गेंद को देखा, खास करके स्पिनर्स को अच्छे से सिंगल्स डबल्स की वैल्यू दिखाई कि अगर आप स्ट्राइक रोटेट करोगे वैसे भी आपको रन मिल सकते हैं. ये खास करके टेम्बा बाबू मैंने क्योंकि मात्र 8-9 बाउंड्रीज मारी थी उन्होंने एंड 70 से ज्यादा रन उन्हें सिंगल से दिखाए थे, तो शायद वो महसूस भी नहीं हुआ कि काफी अच्छी सेंचुरी. और दूसरी तरफ हमने रसी की कहानी आपने भी काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक तरफ अटैक हो रहा था तो एक तरफ एक अप्रोच हो रहा था कि सिंगल डबल्स का, तो ये अप्रोच से 200 रन की पार्टनरशिप हुई एंड लेट्स बी फेयर कि हमें महसूस ही नहीं हुआ कि 200 रन कब बन गए उन दोनों के बीच. एंड आई थिंक 290 वाज अ प्रीटी इनफ बिकॉज अगर आप वो जो ग्राउंड के स्टैट्स है वो शायद उतने कन्विंसिंग नहीं है वाइल्ड चेसिंग. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स फेवर्ड देम, बट आई थिंक द best thing about them as a unit was they capitalized big moments and जब moments उनके तरफ थे they took the most of it. And I think यही कहानी क्योंकि इंडियंस के बीच भी जो धवन और कोहली की पार्टनरशिप बनी थी देयर वाज अ सिमिलर सिचुएशन, दे डिडंट पैनिक एंड वहां पे विकेट मिली थी क्योंकि रन रेट का दबाव उन्होंने लगातार रखा था कि हम लोग रन आसानी से नहीं लेंगे, आप सिंगल डबल देते रहिए. And that eventually cost the wicket of Dhawan. So a lot of credit for them not to panic in big situations, and a team going through transition. I think in an inexperienced team is giving such a brilliant performance against a top class team. So credits to them for them. Exactly, top class team indeed, and just a little bit of a different kind of an update from the India South Africa match. So Ronak in the comments is giving us live updates from the Under 19 World Cup, and India, I think with lots of COVID cases in the team, they still managed to put up a good score, 307 for 5, and now currently Ireland are 17 for 3. So it is looking like a good situation to be in the Indian camp. So at least we all can be happy, and India will be looking to get their second win in the World Cup. So hoping for that. Coming back to the India South Africa series, तो ओमकार ऑलरेडी मतलब कमेंट सेक्शन में मिडिल ऑर्डर के बारे में बहुत कुछ कहा ये गया है. हमेशा का तो टॉपिक शिवान है, ये हमेशा का टॉपिक है. एग्जैक्टली हमेशा मतलब 5-6 साल लाइक रौनक ने मस्त ग्रुप पे बता दिया था कि विल बी आस्किंग द सेम क्वेश्चन दैट वी हैव बीन आस्किंग फॉर द लास्ट 5 or 6 years. मतलब सेम रौनक फिर ने ये से कल भी कहा था. कल भी कहा था, मतलब विजनरी हो गए रौनक एक्सेप्ट फॉर इस 3-0 का प्रेडिक्शन. ही इज लाइक अ Yes, yes. विजनरी इंडीड. तो शिवानी ने यहाँ पे कहा कि ऐसा लगता है कि टॉप 3 के जाने के बाद जीतने की होप्स ही छोड़ देनी चाहिए. मिडिल इज जस्ट pathetic. And also to that, Nitin also said that it looks like Pant will bat at number 4 for longer run. So Omkar, I want to know your thoughts on that number 4 position. So obviously I saw that lots of people were criticizing the move कि why Pant, why not Iyer. मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन तो चलो बोला जाता है, बट अय्यर को if you use him properly at number 4 he will give you result, but if you keep on moving him here and there so he will not be settled. So I want to know your thoughts on that number 4 position. Who should bat there till the 2023 World Cup? वेल ये नंबर 4 जब मैं पोजीशन सुनता हूँ मुझे सिर्फ एक आदमी का नाम याद है, दैट इज अजिंक्य रहाणे, हु बैटेड ब्रिलियंटली फॉर अस एट नंबर 4 इन द 2015 वर्ल्ड कप एज वेल. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, I don't know, he was just removed from the ODI team because in जो लास्ट साउथ अफ्रीका टूर था हमारा 28 सेंचुरीज लगाई थी 6 ODI सीरीज में. तो आई फील कि उनको अगर रखते वर्ल्ड कप में तो शायद बैलेंस हो जाता, बट द टीम हैड समथिंग एल्स. आई थिंक ये नंबर 4 पंत का थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है. लाइक यू टॉक्ट अबाउट द लेफ्ट एंड राइटी कॉम्बिनेशन, ये हर बार मतलब आप वो ओल्ड ट्रेडिशन वे में नहीं जा सकते. लाइक आवर ओपनर्स वर सचिन तेंदुलकर एंड वीरेंद्र सहवाग, राइटी कॉम्बिनेशन. ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स थे हेडन एंड गिलक्रिस्ट, बोथ आर लेफ्ट हैंडर्स. एंड it might be successful when the players have batted in both the position. Like for example in 2011 World Cup there was some instance like there was some instance
when Yuvraj Singh was told to bat below MS Dhoni in the World Cup final. जब भी मतलब there were talks that Sachin and Sehwag were talking that if righty gets out, then MS should go, and if a lefty gets out, that is Gautam Gambhir gets out, then Yuvraj Singh should go. And also Muralidharan was playing. तो I feel जब players ने दोनों position में perfectly खेला, because you see Yuvraj has batted well at number 5 and number 6, and even Dhoni has batted well at number 5 and number 6. So मतलब if the players are used to the positions where they can switch and sometimes swipe due to the conditions required or because of the situation, then it's fine. But अगर आप consistently अय्यर जैसे player को, because अय्यर plays at number 4 even for when he used to play Delhi Capitals as a captain. Yes, I'm mentioning him as a captain because the way he was treated, it was really bad for him. And even in the Indian team, in the New Zealand tour, he was batting at number 4. और वहाँ पे New Zealand tour में I guess apart from Shreyas and KL, nobody batted long, and that was the result. We lost 3-0 against New Zealand in ODIs, the pre-COVID series. तो आई फील श्रेयस अय्यर को लॉन्ग रन देना चाहिए. पंत 4 नंबर पे नहीं, आई डोंट फील दैट ही हैज बीन दैट इफेक्टिव, स्पेशली इन द ओडीआईज एज वेल एंड इवन इन द T20s. वाइट बॉल में इतना कुछ कर नहीं पाया जितना टेस्ट में किया है. इनफैक्ट द टॉपिक ऑफ पंत इज लाइक टुडे इज 19th, ही हिट द विनिंग रन्स लास्ट ईयर. वी आर जस्ट cheering for him last year, and today he just threw away his wicket coming at number 4 and just building pressure around himself and around his partner, and just wasting the opportunity which was given to him ahead of Shreyas Iyer. And even Surya Kumar Yadav is a number 4 player. उनको भी आप नहीं खिला रहे थे, तो एटलीस्ट श्रेयस अय्यर को आप खिला सकते थे. बट the team management went with the traditional approach that have backfired in this ODI. एग्जैक्टली तो हमने एक पोल भी डाला हुआ है इन द कमेंट सेक्शन कि हु शुड बैट एट नंबर 4 फॉर इंडिया. अभी तक 7 वोट्स आ गए. 86% ऑफ द पीपल वोटेड फॉर अय्यर एट दिस मोमेंट. इज दिस रिसेंसी बायस और आई एम नॉट श्योर. अभी 75 हो गया, सो इट माइट बी लाइक going up and down in the favor of. So Delhi Capital fans का fan war चल रहा है वहाँ पे अलग-अलग. हाँ, Delhi Capitals बराबर. So we'll see what happens. I just wanted to add on this thing. Number 4 का जो debate है, small thing that I mean, once Rohit returns, Rohit and Dhawan are definitely gonna open. I mean, if Dhawan continues to bat in such way, so on a simple note, KL Rahul is gonna come and bat at number 4. So that's the end of the debate indirectly. Okay, yeah, I mean KL Rahul is also an option, but I'm not sure if he will be batting and in the middle order again. अगर या ऑल्सो गर्वित का जो हैशटैग था, गर्वित ऐसा नहीं है, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट युवराज सिंह. मैं उनके साथ मेरा बर्थडे शेयर करता हूँ. युवराज सिंह हैज बीन वन ऑफ माय बिगेस्ट आइडल्स, एंड उनके जैसा मिडिल ऑर्डर प्लेयर हमें नहीं मिल सकता डेफिनेटली. बट ये टाइम ये युवराज सिंह के बारे में बात करने का नहीं है. वी ऑल रिस्पेक्ट हिम एज अ प्लेयर, बट इट्स टाइम टू थिंक ऑफ द यंग प्लेयर्स एज वेल. हम कब तक युवराज सिंह और रायना के बात करके हम खुद को व्हाट वी कैन से दिलासा देते रहेंगे अपार्ट बिकॉज ऑफ दिस मिडिल ऑर्डर क्राइसिस व्हिच वी आर हैविंग. Exactly, and nicely put up. मतलब कि चलो, मतलब yes, we had celebrated those players, but it is now also time to look at the present. So really nicely put up. तो थोड़े से comments में भी ले लेते हैं. So since we started discussing about the middle order thing, बहुत से comments आए थे. तो आदित्य का comment I think we forgot to take. Pant at number 4 is according to him wants to see in games more. Let's not judge him too early. Pant getting balls to settle and then unleashing it later. But उसके खिलाफ पे भी I think अय्यर के लिए बहुत support आया. You can see Pratisha joining us again. She's saying Iyer at 4 has proved it before. Since 2019, he has a good record at number 4. So you should keep on backing him. Aditya Shinde is saying left and right hand combination sucks. So clearly sucks. Saying that it's not suck. It will be too harsh if we use the word suck. Yeah, it's a good approach. मतलब bowlers and captain को भी think करना पड़ता है when there are two batsmen of opposite technique. But ठीक है, कभी कभी हो जाता है. यू कांट ऑलवेज रिलाई, हम ऑलवेज रिलाई नहीं कर सकते कॉम्बिनेशन पे, बट इट्स नॉट दैट बैड टू से द वर्ड सक्स. I think it's more of the time that when we chase any target and when the situation is critical, such experiments keep on happening. I mean, जब वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, I think नंबर 4 पे हार्दिक ही आए थे, and no one thought that कि कोई हमने विजय शंकर को थोड़ा रेट किया तो उन्हें चूज किया था. बट इवेंचुअली ऐसी सिचुएशन आई कि 30-35 ओवर्स के बाद ऐसी सिचुएशन की वी नीडेड क्विक फायर एंड हार्दिक ही आते थे. सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स मोर अबाउट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो अगले टाइम अगर नॉर्मल सिचुएशन रहेगा या फिर एकदम न्यूट्रल लेवल पे मैच चलता रहेगा, हमें शायद श्रेयस अय्यर ही दिखेंगे या फिर सूर्य कुमार जो भी कॉन्स्टेंट बैटिंग करता है उधर.
Exactly, and Nitin Modi is also saying ki Pant at number 4, no issues. Virat bats with slow strike rate at number 3. Iyer also bats as same as Kohli. Pant can go aggressive, so that can be the only reason for giving him long run. Very interesting. Abhyuday is also saying that he pointed it out in the stream yesterday that Iyer is Yes. abysmal against seaming tracks to the rising ball, and he got out to the shorter delivery, his arch nemesis. I mean, that was like unnecessary shot to play. Both the Ayers played a horrid shots, and Sreyash played a wider one today, so back him. So he wants Surya Kumar Yadav to be playing in that number 4 role. So जैसे ओमकार ने कहा earlier कि Surya Kumar Yadav is also a good option. So let's see. मतलब I'm not saying कि a change should happen right away. I don't think he will be making that change in the second ODI. I think आधे से ज़्यादा same team ही रहेगा. Just one or two. If निगल किसी को हो गया mysterious निगल, then ही कुछ बोल सकते हैं. तो लेट्स टेक अरे थोड़े यार, से कमेंट्स भी ले लेते हैं. तो नॉट जस्ट अबाउट इंडिया साउथ अफ्रीका. तो इवन मैंने एक गर्वित प्रणव का इज कमेंट सेइंग. देखा था. सॉरी, हाँ, यू कैन कंटिन्यू देन आई विल स्पीक. श्योर श्योर. तो प्रणव ने यहाँ पे मैक्सवेल के बारे में बताया. सो 150 रन्स ही स्कोर्ड इन द बीबीएल. सो इफ पीपल हु हैव नॉट ट्यून्ड इन टू वॉच बीबीएल, जो लोग डिप्रेसिंग वे में इंडिया साउथ अफ्रीका देख रहे थे, बीबीएल में एक बहुत अच्छी मैच हो गई थी. मेलबर्न स्टार्स स्कोर देयर highest score in BBL history, 273 for 2, and narrowly missed out on the all-time T20 record of 278 by Afghanistan, if I'm not wrong. So Glenn Maxwell scored 154 of 64 balls, and also Stoinis scored 75 of 31 balls. So So it was that like might amazing. solve. So that might solve RCB's captaincy problems if they are. They might think to give Maxwell as a captaincy, because Maxwell had captained Kings 11 Punjab. Exactly. That's a good point. That's actually a good point about Maxwell, the captain, because captain's innings, opening the innings, he opened the innings. So maybe RCB can also look this match, and we can see Mike Maxwell and Jason is Kohli opening. watching. तो लेट्स सी, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टाइम. तो इवन स्टॉइनिस, जैसे गर्वित ने कहा, लखनऊ पावर 11 क्रोज हम क्रिटिसाइज कर रहे थे सोशल मीडिया पे, 11 क्रोज दिए, बट proved out to be good. I mean, with the ball Yeah, be also, I think, definitely. did he ball? I'm not sure if he balled, but I think with the bat also he did really well. So 263 runs का record broken by an RCB player. So mixed emotions for RCB fans. Pratisha is an RCB fan, so I mean mixed emotion, but really good signs for RCB going forward. Coming back to India versus South Africa again. तो already हम इंडिया के बारे में बहुत बात की. Let us now also talk about South Africa. I mean, they carried the momentum, Ankit. टेस्ट सीरीज में जो जीते, एंड दे कैरिड द मोमेंटम इंडीड राइट फ्रॉम विनिंग द टॉस, and that partnership in the middle order. We spoke about the middle order. Let us now speak about their bowling. So जैसे ओमकार ने कहा था एडियन माकरम को उन्होंने पावर प्ले में खिलाया, that was a strange move. And there was someone who in the comments also said कि एडियन माकरम was केदार जाधव of South Africa. So Ankit, I want to know your thoughts about Aiden Makram. Do you think that South Africa has figured out their sixth bowling option better than what we could have figured out in the last 1 or 2 years? Well, yeah, on a certain basis they can agree with the fact, but at times हम इस move पे हंसेंगे, but at the same time we need to admire such moves because at times आप वनडे क्रिकेट में क्या होता है कि 50 ओवर का फॉर्मेट एंड चाहे वो ओपनर कितना भी अच्छा हो, वो शुरुआत के 10-15 गेंदे खुद को टाइम देना चाहते हैं. एंड यहाँ पे ही जब एक स्पिनर आता है ना, हालांकि एडम मार्करम की अगर आप गेंदबाजी देखो कुछ भी स्पिन नहीं मिलता उन्हें, बट जब गेंद स्किट होती है आई थिंक इट कैन बीट द बैट एंड दैट्स व्हाट द केस happened with KL Rahul. And I think sometimes you need to follow your oppositions as well. And जो South Africa कर रही है, अगर I mean on a serious basis, we could have done that. I think we could have won the match by a better margin as well. Because अश्विन अगर पावर प्ले में आते या फिर आप सिक्स बॉलिंग को एक्सप्लोर करते, आप ये छोटी छोटी चीजें, शायद उनके पास केशव महाराज का भी यूज कर सकते थे, बट शायद दे वेंट फॉर ऑप्टेड फॉर मार्करम. एंड आई थिंक तो ये माइंड में होता है कि वो कप्तान कितना एक्टिव है. इट्स नॉट जस्ट एवरी टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव होगी तो दैट डजंट डिफाइन यू एज द ग्रेटेस्ट कैप्टन. तो केएल राहुल ने आई थिंक बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल उनकी थोड़ी एग्रेसिव लगी, बट समटाइम्स आप कैप्टनसी में आप असरदार कैप्टनसी कर सकते हैं. जैसे आज मेरे कमेंट्री में काफी एक अच्छी बात कही थी गंभीर ने कि एट टाइम्स जब 4 फील्डर रहते आप 3 फील्डर ही रखे आउटसाइड द सर्कल. एंड ये छोटे छोटे मूव्स है, बट आप एक चीज इंटेंड कर सकते हैं कि वी वांट टू पुट प्रेशर ऑन यू एंड वी आर इन द हेड टुवर्ड्स विकेट. सो शायद ये छोटी छोटी चीजें एट टाइम्स गेम में भी आप एग्रेसिव रह सकते हैं. एंड आई थिंक दैट समवेयर जो साउथ अफ्रीका था, हमारी बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल ठीक थी बॉलिंग करते हुए, बट लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीका. आई मीन this is one of the team, even I think
WTC में I think one of the teams who can go in the final and may win the trophy. That's still long for them, but I think the way they played in the Test series against India, I think it's something we need to admire them rather because शायद एक पोर्ट्रीज ब्रीच होता है वो अलग बात होती है बट उसी जो मुकाम को लगातार बरकरार रखना आई थिंक ये बहुत अच्छी बात साउथ अफ्रीका ने करके दिखाई खास करके वो जो थर्ड टेस्ट था कैप्टन उन्होंने अपना दबदबा इंडिया के सामने लगातार अब छठी बार अभी तक दे हैव बीन अनबीटन आई मीन व्हेनेवर वी हैव प्लेड एट कैप्टन सो दैट शोज how much they have been focused and whenever they face against India, I think it sometimes puts we need to admire them because शायद एक अच्छी कहानी रची उन्होंने लास्ट टाइम मुझे याद है जब हम लोग ने टेस्ट सीरीज हारी थी वो वनडे की वजह से हम लोग शायद उतना भूल गए थे क्योंकि वनडे में हम लोग 5-1 जीत गए तो वो हमने टेस्ट सीरीज को जान लिया था बट यहाँ पे आई मीन दे आर जस्ट वन विन अवे फ्रॉम व्हाइट वॉशिंग द होल टूर सो क्रेडिट टू देम बट इंडिया नीड्स टू शो अ बाउंस बैक Exactly, indeed. तो आई मीन वेरी ग्रेट वर्ड्स अबाउट साउथ अफ्रीकन क्रिकेट. अगर कोई साउथ अफ्रीका का फैन देख रहा होगा इट ही विल बी रियली इमोशनल. अगर उसको हिंदी आती होगी तो देखते हुए तो ओमकार, गर्वित इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर यू अबाउट समथिंग. सो कुछ आप कुछ कहने वाले थे गर्वित के लिए, उसको असाइनमेंट करनी है तो आप जल्दी से उनकी विश पूरी कर दीजिए. या मैं गर्वित के यही कह रहा था. उन्होंने कहा था कि युवराज सिंह का टाइम क्या होता है. या आई अंडरस्टैंड गर्वित. आई एम अ ह्यूज युवराज सिंह फैन. आई ऑलवेज वॉच हिज वीडियोस. बट द थिंग इज कि अभी उनके बारे में बात करें कुछ मिलने वाला नहीं है. वी जस्ट हैव टू थिंक. पास्ट में तो मतलब जो मिडिल ऑर्डर ये देश वो संभालते थे. व्हाट मिडिल ऑर्डर वी हैड. रायना, युवराज एंड धोनी. नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7. सो इट मतलब टेंशन की बात ही नहीं थी. बट अभी क्या है कि टॉप ऑर्डर वैसा है. We have Rohit, Dhawan or Rahul who is available in opening, and we have got our former captain. अब captain बोलने की आदत हो गई है विराट कोहली को. तो even Crickbuzz did it today. Crickbuzz was also mentioning Virat Kohli the captain. So ऐसा था कि पहले मिडिल ऑर्डर संभाल लेता था. अभी टॉप ऑर्डर पे बहुत कुछ हो रहा है. तो आई फील कि we need to talk about the present right now. Yeah. Indeed, talking about present indeed. तो शिवानी का एक क्वेश्चन आई वांट any of you can answer. Thoughts on Yuzvendra Chahal and Bhuvi. तो because Yuzvendra Chahal भी this was like a comeback game for him. कल उन्हें हमने बहुत hype किया कुलचा का performance in 2018. But today both of them really looked pretty average. So Ankit, what are your thoughts on Yuzi and Bhuvi's performances today? Well, Bowie was pretty decent towards the end. I mean, he was bowling really good in the 47th and 49th overs in the last couple of overs. But शायद ये कहानी भी रही है. I mean, जब इनिशियली मैं आज वो स्टैट भी दिखाया था स्टार स्पोर्ट्स की कि 105 का एवरेज है इंडिया को विकेट मिलने का. सो आई मीन इट टेक्स ऑलमोस्ट डिग 18 to 19 ओवर्स फॉर इंडिया टू गेट अ विकेट इन द फर्स्ट 10 ओवर. सो शायद ये एक स्टैट बहुत हर्ट होएगा एज एन इंडियन फैन क्योंकि वी वांट दैट अर्ली स्ट्राइक्स एंड वी नीड टू कैपिटलाइज वंस वी गेट दैट स्ट्राइक्स. अगर आप मोमेंटम शुरुआत में ही अगर सामने वाली टीम 50-60 रन बना दे और विकेट ना खोए सो 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स ऐसा होगा कि वो टीम 300 या 350 के आसपास बना सकती है क्योंकि उनके पास विकेट्स इन हैंड है. आज वही कहानी हुआ. उनके पास विकेट्स इन हैंड टूवर्ड्स द एंड शायद उतने रन नहीं बने बट इट वाज सैटिस्फैक्टरी फॉर देम टू गेट अ विन. सो एक बड़ी एक मूवी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मीन फॉर हिम ही नीड्स टू गेट फॉर्म बिकॉज शायद कहा ना कहा उनपे एक लाइकली चांसेस हो सकते हैं दीपक सर उनकी जगह ले नहीं सकते बट चांसेस में रेडार में क्योंकि अच्छी गेंदबाजी आईपीएल में की नए बॉल के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. तो अगर बुवी नए बॉल के साथ नहीं ले सकते तो आई थिंक वो एंड में कितना भी वो प्रेशर डाले या फिर अच्छी गेंदबाजी करे व्हाट मैटर्स इज गेटिंग विकेट्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स. आज बुमराह को मिली वो हमारा भाग्य था क्योंकि बुमराह लगातार बेसिस पे अब तो बोलना पड़ेगा बैटिंग में भी योगदान दे रहे. सो इट्स नथिंग दैट कि एक कोई भी अब डिपार्टमेंट ही नहीं रहा जहाँ पे बुमराह योगदान करे. आई मीन आज ऐसे दिन आ गए. आई मीन आई एम रियली वरीड कि बुमराह से अभी हमें 50 ओवर में भी बैटिंग एक्सपेक्ट करनी पड़ रही है कि 50 ओवर तक आप खेल जाओ थोड़े रन बनाओ. आई मीन दैट्स रियली डिसअपॉइंटेड एंड वी शुड बी वरी फॉर दैट एज वेल बिकॉज आप नहीं चाहते कि टेल एंडर्स 50 ओवर फॉर्मेट में भी रन बनाए. तो आई मीन आई रियली कैंट एक्सप्रेस इट राइट नाउ. सो अ लॉट ऑफ वरी बट यूजी का क्या था आई थिंक साउथ अफ्रीका वेर प्रिपेयर्ड फॉर हिम. आई मीन द लास्ट टाइम जो टूर हुआ था हमारा शायद उस टाइम 34 to 35 विकेट्स कुलदीप एंड युजवेंद्र चहल ने लिए थे बट दिस टाइम साउथ अफ्रीका वेर प्रिपेयर्ड विद देयर स्क्रिप्ट एंड शायद दोनों बवुमा हो या फिर आप रसी की बात करो आई थिंक दे वांटेड यूजी की ज्यादा कैपिटलाइज ना करे. उनको डॉट बॉल ज्यादा दिए नहीं स्ट्राइक रोटेटिंग किया जिसकी वजह से युजवेंद्र चहल को चांस ही नहीं मिला
किसी भी बैट्समैन को अनसेटल करने के लिए. सो क्रेडिट टू देम अगेन. They were better prepared and executed better against Shell, and that's why again दोनों गेंदबाज को विकेट नहीं देने में that turned out to be a victory for them. एग्जैक्टली इंडीड. तो प्रणव ने उनकी सेकंड ओडीआई, आई थिंक T20, आई थिंक ही मेंट ओडीआई, तो सेकंड ओडीआई की उन्होंने उनकी प्रेडिक्ट भावना 11 रह गए. बताई. So Ruturaj, Dhawan, Virat, Shreyash, Rahul, Pant. So he wants Rahul in the middle order. Pant, Ashwin, Shardul, Deepak, Bumrah and Chahar. तो दीपक चाहर के लिए वो बोल रहे हैं कि नीचे से बैटिंग भी कर सकते हैं. सो इट्स लाइक अ गुड पॉइंट. दीपक चाहर ने आई थिंक Yeah. श्रीलंका में भी एक मैच जिताई थी विद हिज बैटिंग, Yeah. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो शायद ही कैन बी रियली हैंडी इन सच सिचुएशन. तो जस्ट इमेजिन इफ लॉर्ड कंटिन्यूज हिज फॉर्म, देन आवर लोअर ऑर्डर विल बी रियली गुड. तो शिवानी ने ये भी कहा कि सिराज इन सेकेंड ओडीआई शायद वो दिख सकते हैं. I think first ODI they were still worried कि is he 100% fit or not, but अगर fit है then he definitely comes in. I think unfortunately it will be Bhuvi who will be missing out if ऐसा situation हो. And Abhyuday has asked a really interesting question. Omkar or Ankit, anyone of you can answer this. Spinners का problem, I think this is really a big problem that we need to address. So with the World Cup in India, horses for courses need to be used over legacy. So depending on the conditions and the form of the pitch and everything that is considered, जो भी team होगी we have to consider that based on whatever the conditions are there. So he's saying कि use Bishnoi, Kuldeep, Patel as rank turners in World Cup 23 could be a factor. So your thoughts, do you want to see Ravi Bishnoi, Kuldeep and Akshar Patel more in the limited overs format from like next 14-15 months के लिए? वेल कुलदीप यादव ऐसे प्लेयर है जो जिनका मतलब अभी जो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुके हैं. मतलब थैनोस ने ऐसा किया था वैसे डिसअपियर हो गए कुलदीप यादव. इट्स लाइक दैट. अक्षर पटेल को सिलेक्ट किया गया था एज अ बैकअप फॉर जडेजा, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी इंजर्ड हो गए. तो शायद आज अक्षर पटेल दिख जाते हम लोग को. शायद अश्विन नहीं दिखते, अक्षर पटेल दिखते, या फिर चहल नहीं दिखते, अक्षर पटेल दिखते. एंड बिश्नोई डेफिनेटली यंग है, लेग स्पिनर है, तो मे बी सिलेक्टेड एज अ बैकअप, क्योंकि राहुल चहर का इतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा था. इवन T20 वर्ल्ड कप में जब उनको एक मैच खिलाया था, ही वाज गेटिंग स्मैश्ड. एंड आईपीएल सीजन भी इतना अच्छा नहीं रहा था यूएई में. एंड probably in the domestic circuit he was also not doing good, and India A2 में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे था. तो रवि बिश्नोई can take his chance because his what I can say, his bowling action is really a bit surprising. मतलब he dances with the ball and makes the batsman clueless. हमने ये under 19 के final और even in the IPL में भी देखा था. and fielding भी काफी अच्छा करते. so रवि बिश्नोई का ज्यादा अच्छा चांस है. कुलदीप यादव I don't think he will come back because एकदम से he's just vanished. Hope he doesn't get unsold in the IPL auction. Because he's just seeing his worst days of cricket right now, especially in international and even franchisee, because he's not been played in any matches in KKR. Varun Chakravarti and they are playing Sunil Narine, so उनका भी जगह नहीं बन रहा है. एग्जैक्टली. एंड शिवानी ने भी कहा कि वी वांट विकेट टेकिंग स्पिनर, तो शायद बिश्नोई एंड लॉट्स ऑफ लाइक दिस इज द ये जो आईपीएल भी होगा, आई थिंक दिस इज आल्सो गोइंग टू प्ले अ मैसिव रोल in identifying those players. So even Nitin Modi ने कहा कि Deepak Huda could have been groomed properly in the middle order. And there are lots of names. Even finisher के लिए Shah Rukh Khan is also making his case. Did well in the IPL. Did well for Tamil Nadu in the domestic circuit as well. So ऐसे there is a good future. But what really Sanchit, you matters is forgot one finisher's name. Dubey Shivam sir, तो Dubey. मतलब he is unbelievable. मतलब he will be directly playing in the final if we make it in 2023. तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट हाँ, प्रतीक्षा कह रहे बुमराह सेड मियां वाज फिट. तो वंस अगेन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बीसीसीआई मतलब बहुत बार हो गया अभी, तो मतलब आदत नहीं लग गई है. I don't पता नहीं ये ट्रांसपेरेंसी का पता नहीं, but maybe like you said शायद more precautionary measure they wanted to see. And get as a third pacer शार्दुल को लेना worth है because of his batting. मतलब आज देखा, irrespective of the result, he scored 50 or 43 balls. मतलब he did his job what he was told to do at number 8. So I don't think so. mystery spinner की बात हो रही है. मिस्ट्री स्पिनर ओके. वरुण चक्रवर्ती कहाँ गया? तो इट्स रियली मतलब क्यूरियस दिखेंगे आपको मार्च एंड से दिखना वापस चालू हो जाएंगे, या फिर T20 सीरीज है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज है, उसमें भी शायद आपको दिख जाए. बिकॉज ऑफ हिज इंजरी concerns, he can't play the longer format, that is the ODI. तो वो 4 ओवर डाल दे वही बहुत है. Exactly. So even Aditi is saying, how about Abhishek Sharma? So मतलब yes, there are lots of good names already in the domestic circuit, and even IPL could be playing a massive role. तो जैसे वरुण चक्रवर्ती को कैसे
टीम में डायरेक्टली लाया गया बिकॉज ऑफ द सक्सेस मेजरली इन द आईपीएल. तो मे बी दिस next two seasons of IPL can be defining period for lots of the players. So even Rahul Chahar ke bare mein Pratisha is saying he was dropped, and Yeah. maybe he will be also making a comeback in this format, because we really need wicket taking spinner. So abhi agar if Chahal continues to not impress, then maybe Rahul Chahar will be coming back in. So coming back to the main series once again, so we are just 5 minutes away from 5 to 10 minutes away from wrapping. So let us have our final thoughts for the series to come and do our prediction bit. So starting with you, Omkar, 1-0 down. Are you backing the trend? मतलब जो हम लोग ने ट्रेंड सेट किया है कि पहला मैच हारो, सीरीज जीत जाओ. And even you are very familiar with it also. I want to know your thoughts. Do you think the trend is going to continue at the end of the third ODI? Yesterday I mentioned 2-1 in favor of India. I knew that एक मैच उनके फेवर में जाने ही वाला है. वो मोस्टली फर्स्ट ही लग रहा था मुझे, इसलिए आई वॉज नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट एंड मैंने एकदम से 3-0 नहीं बोला जैसे रौनक ने बोला था कि मैं इंडियन फैन हूँ, एकदम से मैं 3-0 ही बोलूंगा. बट नो, आई न्यू एक मैच तो यार होस्ट है, कुछ तो करेंगे जीतने के लिए, एंड दे डिड टुनाइट. सो आई एम स्टिल बैकिंग 2-1 एंड in favor of us because KL Rahul will definitely bounce back. एक मैच थोड़ा स्टार्ट नहीं दे पाया तो ठीक है, ओपनिंग काफी अच्छा कर रहे हैं. एंड विराट कोहली भले भले 100 नहीं मारे चलेगा, 50-50 मार रहे, रन बना रहे, टीम के लिए जितना चाहिए बहुत है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम हिम. लेट हिम बैट, लेट हिम एंजॉय. अभी कैप्टनसी छोड़िए, आराम से विदाउट टेंशन फ्री उनको खेलने दो. विराट कोहली को 50 पे 50 मारने दो, चलेगा. Exactly, and it's a good point that you made about Virat Yeah. Kohli, because आज भी मैंने सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे पोस्ट कमेंट्स देखे कि ओ विराट कोहली शुड हैव एडवाइस केएल राहुल फॉर हिज कैप्टनसी, बिकॉज ऑफ हिम वी विल. अरे भाई, इतना भी क्रिटिसाइज किया है, विल नाउ जस्ट लेट द मैन गो, लेट हिम आल्सो एंजॉय हिज बैटिंग. Already he was under immense pressure for the last 2 years. Now he's no more a captain. Let him just enjoy the way he's batting, and let's not just pressurize him even more. So बट स्टिल ही वाज बीइंग एग्रेसिव. बाउमा के साथ मतलब एकदम से Yeah. बोल दिया कि आई एम नॉट द कैप्टन, आई एम नॉट गोना फेस एनीवन आफ्टर द मैच, यू विल जस्ट फॉरगेट योर बैटिंग. मतलब एकदम से बाउमा को ट्रिगर कर दिया उन्होंने. Exactly. Nitin Modi कह रहे South Africa 2-1 India. So इंटरेस्टिंग. interesting. I mean, this is more logical. Because South Africa currently, if you back momentum, and India is also looking a Yeah. little bit क्या बोलते हैं, dismantled at this moment. Plus matches भी 1-2 दिन के gap पे है. So I'm saying कि next match जो भी जीतेगा, they will be winning the series. Obviously, if South Africa wins, then they are winning the series. But if India wins, India is going to win the series. एक स्टैट मैंने देखा था आज. टीम इंडिया इन ओडीआईज विदाउट रोहित शर्मा हैज won just one match. Yeah. And Team India in SENA countries with Rohit Sharma have lost only 2 matches and they have won 8 matches. मतलब you can see the impact of a new captain, and even when he was the vice captain, मतलब जैसा he used to perform in ODIs along with Virat Kohli, उनकी partnerships बहुत लंबी होती थी. So definitely one or two players can definitely make an impact, and that has been happening. 71st is a myth. I don't know. I'm not going to say about anything. 71st मुझे बोलना ही नहीं, मुझे नंबर ही नहीं पता 71st क्या होता है. भूल ही जाओ 71st. तो अभी मतलब भूल ही जाओ यार, कितना जब मतलब आएगा भूलेंगे. तब बहुत जब सेलिब्रेट आएगा करेंगे. या तो नितिन भी कह रहे 71st इन साउथ अफ्रीका. भाई, इवन आई वांट टू सी 71st, बट कुछ कर नहीं सकते. लेट हिम जस्ट एंजॉय द बैटिंग. मतलब 1-2 रन भी मार ले, वी विल चेरिश इट. अभी मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है. होप इज अ बैड थिंग. जितना हम होप करेंगे उतना दर्द होगा. तो इवन शे होप लॉस्ट हिज होप. शे होप लॉस्ट हिज होप. इंडिया, एक्सेप्ट अगर इंडिया के सामने वो अच्छे खेलते तो शायद इंडिया अभी वेस्ट इंडीज आएगी. तो लेट्स सी. प्रणव, हमने एक क्वेश्चन आंसर किया था. ओमकार हैज आंसर्ड इट परफेक्टली इन हिज ओन वे. तो ओमकार, इफ यू वांट टू टेल हिम इन योर ओन वर्ड्स अगेन, इफ यू वांट. मैं क्या बोला था, मैं भूल गया. बहुत लंबा बोला था मैंने. Perfect. But yes, Pranav, I mean, वेंकटेश अय्यर को बॉलिंग देनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो. बट शायद 6th बॉलिंग का इस्तेमाल वी कुड हैव मेड इंस्टेड ऑफ गिविंग शार्दुल ठाकुर ऑल द 10 overs. वरुण चक्र वेंकटेश अय्यर को देनी चाहिए थी. आई थिंक We can't forget the mystery spinner. मिस्ट्री स्पिनर, मतलब मिस्ट्री. मेरे माइंड में भी यही मिस्ट्री है कि वेंकटेश अय्यर को क्यों नहीं दिए. सो मिस्ट्री और वरुण चक्रवर्ती अभी मतलब सिनोनिम्स हो गए मेरे माइंड में भी. तो दैट्स व्हाई वी होप टू सी वेंकटेश अय्यर बॉलिंग इन द नेक्स्ट 2 matches at least.
तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो अभ्युदय सिंह श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज आ रही है 71st आएगा, मतलब कभी आएगा Hopefully at पता नहीं यार. Bangalore. होपफुली एट बैंगलोर या. संचित भाई, ये कौन सा कॉमेडी शो के लिए, कौन सी फिल्म के लिए ऐसा लुक करा है? अरे यार, आई थॉट यू गाइस लाइक माय बियर्ड. अभी ओमकार ने इतना मुझे इंस्पिरेशन दिया बियर्ड रखने के लिए, तो आई थॉट मैं भी बढ़ा लूं बियर्ड. आई वांट टू आल्सो लुक गुड इन व्हेन ओमकार सर इज ऑन द स्क्रीन. तो दैट्स व्हाई. बट यस अंकित, आपका प्रेडिक्शन लेना हम भूल गए. इवन ध्रुव इज अ बिग फैन ऑफ यू. अंकित भाई सुप्रीमेसी. तो अंकित, आई वांट टू नो योर थॉट्स बिकॉज let us not forget guys, Ankit ka prediction is almost like 99.9% spot T20 on. World Cup final. He predicted Australia New Zealand final like when the group stages were happening. तो मतलब credit goes to Ankit. So Ankit, आपका prediction will be like the final nail in the coffin for this series. So here you go. Actually, tough one because when you do something right, people look at you to do the same thing again and again. But looking at the series, I mean, 1-0 South Africa. To be fair, बुरा लगेगा, but I think South Africa 2-1, and we need to digest the fact because this is आपसे third test में खेला था शायद. We thought that it's a do or die for India and India could win the match, but South Africa took the march, and I really want India to win the series, but लुकिंग एट केएल राहुल के कैप्टनसी पे थोड़ा मेरा भरोसा ही उठ गया है बिकॉज शायद जो गलतियां उन्होंने आज की है ना, सी लूजिंग अ मैच इज डेफिनेटली अ डिफरेंट थिंग, बट शायद बेहतर तरीके से कैप्टनसी कर सकते हैं बिकॉज 40 ओवर के अंदर 8 ओवर उन्होंने बुमराह के कंप्लीट किया एंड आई थिंक खाना का बुमराह का भी रोल था. आई थॉट ही विल गिव एन एडवाइस कि मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, मैं खुद को आखिरी 10 ओवर के लिए 3-4 ओवर में खुद के बचा लेता हूँ. आई थिंक ही हैज अ रोल इन लीडरशिप ग्रुप एंड ही नीड्स टू take it seriously because शायद वो पार्ट है वाइस कैप्टन है. सो योर ओपिनियन डेफिनेटली मैटर्स. सो होपिंग कि दोनों अगले टाइम बेहतर करेंगे, बट टू बी फेयर 2-1 साउथ अफ्रीका आई मीन, एंड दे एक्चुअली डिजर्व टूडे मैचेस वेल. ऐसा नहीं था, ऐसा मोमेंट भी नहीं आया एक्चुअली कि हम कह सके कि इंडिया डिजर्विंग था बट जीता साउथ अफ्रीका. इट वाज टोटली देयर डोमिनेशन थ्रू आउट द 100 ओवर्स. सो somewhere I don't think the next one they can win, but I have a feeling that they may win the do or die, which is the third test, the decider. Maybe unless decider tak jaye, but I think that in Cape Town they will continue their domination throughout the series. Exactly. We hope कि ऐसा ना हो. We want to see India coming back in this series. At least third match decider तक जाए, उतना तो मतलब at least we can hope. Abhyuday explaining it in his own great words that mystery that even architect can't solve about Venkatesh Iyer getting the nod over Ruturaj. I mean, fair enough. मतलब Venkatesh, if he was at least seen as an all-rounder, अगर bowling देते then justified. But if he's just playing as a batter, then surely other options are better. Even Sky is there. Ruturaj in Well, the I top think, order भी and there है. another issue was something which I commented yesterday when you guys were on the show that कि नंबर 7 एक इशू है. अगर आप अश्विन को नंबर 7 पे, आई मीन लेट्स बी फेयर, हम इंडियन फैंस तो ये भी एग्री नहीं कर रहे थे कि अश्विन टेस्ट मैचेस में शायद थोड़ा डर तो रहे थे ऑफकोर्स क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था खास करके जडेजा के एब्सेंस में, बट यू वर जस्ट अ बिट अफ्रेड कि अश्विन एट नंबर 7 इन टेस्ट, वो एक डर था. तो यार अश्विन इन वनडेज एट नंबर 7, आई थिंक it's an eventually a risk which can cost us many of the matches because हम चाहते जडेजा है, लेकिन शायद हो सकता है अगले मैच में शरदुल को नंबर 7 पे, बट उनके बॉलिंग से मैं आज पर्सनली बहुत नाराज था. फुल टॉस नो बॉल, फ्रीज पे फुल टॉस दे दिया, आपकी मतलब बॉलिंग सारे आ तो. रही है अंकित, Yeah, I आपकी mean, let's be बातें हो रही fair है because कमेंट्स में. this is something which we always hope him to do better, but आज 3 नो बॉल भी डाले, फिर 70 रन कंक्लूड किए उनके 10 ओवर के स्पेल में, एंड उनका एवरेज जो है इकोनॉमिकल रेट 15-16 मैचेस में 6.80 का है, मतलब लगभग 65 to 70 रन कंसीडर कर रहे हैं एज एन थर्ड या फोर्थ बॉलर. आई थिंक इट्स समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज बहुत बार टीम अच्छी पोजीशन में होती है, फिर आप 65-70 रन देते तो हो सकता है वो मैच में पूरा मैच ही टर्न हो जाए. तो ये सब इकोनॉमी बेहतर हो जाए, विकेट से एक टाइम ना मिलेगा तो भी ठीक है, बट इकोनॉमी 50 के नीचे रखना, 50 रन से कम कंसीडर करना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. तो शार्दुल ठाकुर और अंकित के ऊपर बहुत कमेंट्स आ रहे कि दे बोथ लुक सिमिलर. आदित्य ने ऑल्सो, मतलब हमने ये जोक चालू किया था राइट ड्यूरिंग द आईपीएल, चालू किया था कि आई थिंक ओमकार ने ही पहले बताया था. तो आई एम हैप्पी कि फाइनली बियॉन्ड द पैनल पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग अबाउट दिस. तो यस, टू आंसर व्हाट अभ्युदय सेड, शार्दुल ठाकुर अगर इंजर्ड होते हैं देन अंकित आपको बुलाया जाएगा, तो गेट रेडी, बैक you only रहेगा तो answer आप this. जाके. तो लास्ट फ्यू कमेंट्स ले लेते हैं, देन विल डू द रैप अप.
तो Pratisha कह रहे captaining for the first time can't be too harsh on him. Yes, indeed, he isn't Virat. So already you can अरे see यार, that Virat का fanboys are यार तो भी in her. हार्श यार But तो भी हार्श होने की जरूरत नहीं है. मतलब there are lots, मतलब it's so fun कि मतलब yes, there are lots of मतलब ऐसे banter type रहता है, but उतना भी you can see even Pranav is saying कि रोहित को कैप्टन से मिस किया, डेफिनेटली. but ये तो चलते ही रहेगा कि विराट कोहली कैप्टन, रोहित शर्मा कैप्टन, मतलब ये डिबेट that will keep going on and on and on unless it doesn't become toxic. It is really fun to watch out for. हर्ष कौन है, हर्ष या हर्ष, आई एम नॉट श्योर. Harsh, harsh. अच्छा. अरे यार गर्वित, आप स्कूल जाइए, आप स्कूल जाइए प्लीज. Okay, so I think yeah, it was great talking with all of you. Even in the comment section, really great engagement. I thought कि मतलब इंडिया के हार के बाद माहौल थोड़ा बहुत ऐसे sad या something होगा, but यार संचित, thanks dog. आपने आपका प्रेडिक्शन नहीं बताया अभी तक. No, बहुत I'm मैटर not नहीं, वो saying. करता है बताएंगे. अभी. He just said But one prediction. Janman Malan is going to play good, but he got out in the power play. So that's good. I completely agree with him what he said with yesterday, because जब भी वो बोलते हैं कुछ उल्टा होता है, and that's what happened. That's why we might say that's why he said yesterday South Africa winning 2-1. You never know. आगे दो मैचेस में क्या होगा. exactly. And last comment ले लेते हैं. अक्षत बेचारे कब से comment कर रहे हैं about दीपक चार. Should he play the next game instead of Bhuvi or Ashwin? तो ओमकार quickly आप you can answer it before we do the wrap up. नो, अश्विन तो रिप्लेस नहीं होंगे डेफिनेटली, क्योंकि एज मतलब एज अ बॉलर ही हैज डन रियली वेल. चार साढ़े चार साल बाद कम बैक करना, एंड यू आर गेटिंग विकेट दैट टू ऑफ क्विंटन डिकॉक एंड मेंटेनिंग रन्स. चहल का भी इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, बिकॉज बहुत टाइम के बाद खेल रहे. वी आरसेल्व्स आर प्लेइंग ओडीआई आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो बहुत डिफिकल्ट है टू मेक चेंजेस. काफी हार्श रहेगा प्लेयर पे, क्योंकि वो ओडीआई फॉर्मेट खेले नहीं है. द लास्ट वाज इन श्रीलंका टूर, दैट मेन प्लेयर्स खेले ही नहीं थे. मेन प्लेयर्स तो इंग्लैंड में थे. सो आई डोंट थिंक सो. अगर खिलाना है तो सिराज को खिला लो instead of Deepak, because of the bouncy, because of the South African wickets, what the pitches offer. Siraj might be really handful, and Siraj क्या थोड़ा aggressive भी है, तो एग्रेशन से भी विकेट निकालते हैं. सो प्रोबेबली आई विल गो विद सिराज. अगर चेंजेस करें तो पर्सनली आई डोंट सी एनी चेंजेस, बट इफ एंड बट्स अगर यूज करे, अगर चेंजेस करने, तो प्रोबेबली सिराज माइट कम इन. Okay, indeed. So before we wrap up, I'll also give my thoughts. So I really want to see Deepak Chahar playing the next match. अगर भूवी जा रहे हैं बाहर तो I want to see. I don't want to see Deepak Chahar playing for someone else, because Bhuvi and Deepak Chahar, they are always used like for like, and both of them have the ability to back down the order. So just because I want my tail to be a stronger one, इसलिए I want Deepak Chahar in my team. Yes, Garvit मफतलाल नहीं है, विराटी है. So articulate answer as ever. जैसे अभ्युदय ने कहा about us, we should give the same to you Garvit, because जैसे आपने perfect, आपका जो analysis है ये comment में, it is spot on as well. So guys, thank you for joining us. Thanks everyone who tune in the comments. Akshat, Aditi, Shivani, Abhyuday, Pranav, and Garvit मतलब he's like the star. Sanmay, Dhruv, and everyone who joined in, and I forgot their name, very sorry about that. Pratisha was also there. तो रियली इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू इन द कमेंट्स. अगर आपको हमारा शो पसंद आया, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर आवर स्ट्रीम एंड चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. अगर हम ग्रो होते रहेंगे, देन ओनली वी विल कीप ऑन doing this kind of shows. So we'll be back on Friday after the second ODI at 11 p.m. Hopefully after an Indian victory. So we'll see you on Friday 11 p.m. But till then, it was great chatting with you, Omkar and Ankit, as always. So we'll see you on Friday. So hopefully you have a wonderful day tomorrow, and also ensure to make yourself. Maybe हूँ. Yes, Pranav, I didn't forget your name. मैंने अब starting में भी बता दिया था. If I didn't, I'm sorry, but thank you Pranav also. Like you are one of the regular members on the Third Man Cricket Show के comments में. So really appreciate that. But do join us on Friday. We'll be coming live after the second ODI as well. Till then, this is your host Sanchit Desai signing off. Have a great night, everyone.